प्रवेशे दीर्घमेधता संग्रामय संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लां वरं धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम गणपते नमः। Nervous because in front of Shrikant sir to speak something is so adversary just letting on. वसुदेवं सुतं देवं तं च चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हम बोलते हैं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कृष्ण को जगद्गुरु बताया गया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनी ऋषि को अपना गुरु बनाया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने ऋषि विश्वामित्र को अपना गुरु बनाया। जो गुरुओं के भी गुरु हैं, गुरु दत्तात्रेय, उन्होंने भी 24 तत्व से अपने गुरु को ग्रहण किया। सो गुरु की महिमा तो मतलब चाहे आप मानव शरीर में हो या चाहे दिव्य शरीर में हो, गुरु की महिमा को तो एक तत्व है, वो एक्चुअली फिजिकल बॉडी नहीं है, एक तत्व है जिसकी हम गुरु पूर्णिमा में पूजा करते हैं या गुरु तत्व को हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। तो ऐसे ही गुरु को आभार व्यक्त करने के लिए हम यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं। आपके भी लाइफ में एस्ट्रोलॉजी, बिना एस्ट्रोलॉजी शिक्षा गुरु बोलते हैं, दीक्षा गुरु बोलते हैं, कई तरीके के गुरु हम लाइफ में अपने होते हैं। माँ बाप से शुरू हो गए, पूरे जीवन भर गुरु अलग अलग मौक़ों पे अलग अलग अस्तित्व में हमारे जीवन में आते हैं। तो उन सारे गुरु तत्व के लिए हम थैंकफुल हमेशा रहते हैं। एक कठोपनिषद में एक छोटा सा स्टोरी है। स्टोरी हालांकि बड़ा है, लेकिन मैं क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है उसके रेफरेंस से थोड़ा बहुत उधर ध्यान देना चाहती हूँ। जनरली गुरु पूर्णिमा में हम लोग एकलव्य का स्टोरी बोलते हैं, कर्ण का बोलते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा इस तरफ भी बोला जाए। तो रजिश्रवा नाम के ब्राह्मण थे जिनका 5 वर्ष का पुत्र था जिसका नाम था नचिकेत। तो वजिष्ठवा ऋषि ने एक यज्ञ लिया था करने के लिए, अपनी सुखों की प्राप्ति के लिए। जो वो व्रत ऐसा था कि यज्ञ के रूप में व्रत था वो कि मैं मेरी सारी संपत्ति का, साधन संपदा का सब दान करूँगा और उससे मुझे और संपदा प्राप्त होगी और सुख प्राप्त होगा। तो लेकिन उन्होंने व्रत आरंभ तो किया, लेकिन फिर उन्होंने सब जो डिस्कार्ड करने जैसी चीज़ें थी, जैसे जो गाय जो दूध नहीं देती है, जो गाय जिनको यज्ञ में कोई उपयोग नहीं किया जा सकता, वैसा देना शुरू किया। आज की भाषा में हम बोले कबाड़ देना शुरू कर दिया। जो कोई यूज़ की चीज़ें नहीं है वो उन्होंने देना शुरू कर दी। तो लिटिल स्मॉल नचिकेत यूज्ड टू सी ऑल दिस थिंग। तो उनको ऐसा लगा कि ये पिताश्री ठीक नहीं कर रहे हैं। तो उनके पास जाके प्रश्न करते हैं नचिकेत अपने फादर से कि आप ये सब कर रहे हैं, ये दान कर रहे हैं, वो सब ठीक नहीं है। आपने जो व्रत किया है, आपने जो संकल्प लिया, उस हिसाब से दान कीजिए। तो पिताश्री को ये अच्छा नहीं लगा कि छोटा सा बच्चा है और ये बोल रहा है, तो बहुत चिल्ला दिया उसको। लेकिन उसके बाद फिर वापस नचिकेत पूछते कि आप फिर मुझे कहाँ दान करेंगे। तो वो बोलते हैं, पिताश्री बोलते हैं कि जा मैं तेरे को यम देव को दान कर देता हूँ। तो पिता के वचन सुन के वो यम लोग निकल पड़ता है। पिताजी रोकते भी है, फिर वो रुकता नहीं है। यम लोग जाता है तो यम देव बाहर गए हैं, 3 दिन तक लौटते नहीं है। 3 दिन वो बिना खाए बिना पिए यम लोग के दरवाजे पे पड़ा रहता है। वो खाने की शोध भी करने नहीं जाता कि तो उसको ऐसा लगता है कि मैं चला जाऊंगा तो
यम शायद आ जाए और मैं मिस कर दूँ। तो वो 3 दिन तक बिना खाए पिए वहाँ पड़ा रहता है। यम जब भी 3 दिन के बाद आते हैं, वो देखते हैं एक अतिथि बालक, ब्राह्मण बालक उनके दरवाजे पे बैठा है, एकदम निर्जीव सा हो गया है। तो फिर वो अपना उनका विवरण सुनते हैं सारा कि ये 3 दिन से आपसे मिलने आया है, ये है वो है। तो फिर उनका संवाद होता है। तो उसमें नचिकेत बोलता है कि मेरे फादर ने, सब लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। तो यम उसके ये जो प्रण होता है कि मैं फादर की आज्ञा से आया हूँ और यहाँ पे उन्होंने 3 दिन जो तपस्या सॉर्ट ऑफ की, तो यम बड़े खुश होते हैं। शायद ऐसा आज के ज़माने में हम सोचे तो यम को कौन मिलने जाता है, तो लेकिन ये आ गया तो यम बड़े खुश होते हैं। तो वो बोलते हैं कि तूने 3 दिन तपस्या की तो मैं तुझे 3 वरदान देता हूँ। तो 3 वरदान देता हूँ। तो नचिकेत उनसे पहला वरदान मांगते हैं कि मेरे पिता को जो उनकी सुख की कामना है वो पूरी हो। तो वो सुख की कामना पूरी हो जाती है। दूसरा वरदान मांगते हैं नचिकेत की मुझे अग्नि की शिक्षा चाहिए, मुझे यज्ञ याग ये सब कैसे करना है और मैं ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति कैसे करूँ, वो मुझे दीजिए। मतलब अपने गुरु बनाते हैं यम को। तो यम उनको वो भी दे देते हैं। फिर तीसरा होता है कि वो बोलते हैं अभी तीसरा वरदान तुमको क्या चाहिए। तो वो बोलते हैं मुझे मृत्यु का रहस्य, आत्मा का रहस्य और पूरे मतलब ब्रह्मांड का रहस्य मुझे जानना है। तो यम बोलते हैं कि ये 5 साल का बच्चा है, मृत्यु का रहस्य पूछ रहा है, तो मैं इसको कैसे दे दूँ। तो वो उसको बहुत प्रलोभन देते हैं कि मैं तुझे राज्य दे देता हूँ, मैं तुझे स्वर्ग की सारी संपदा दे देता हूँ, मैं तुझे XYZ हर तरीके के प्रलोभन उसको दे देते हैं यम। लेकिन नचिकेत मानते नहीं है, मुझे तो मृत्यु का रहस्य जानना है, आत्मा का रहस्य जानना है। तो यम उसको अवॉइड करने के लिए महीनों के लिए वापस टूर पे निकल जाते हैं। वो वहीं पे बैठा वापस प्रतीक्षा करता है नचिकेत की, मतलब जब आएंगे तभी मैं वापस उनको, जैसे आप लोग पकड़ते हैं ना स्टाफ रूम में तो ऐसे तो आते हैं यम वापस। तो फिर भी वो नचिकेत वहीं रहता है। फिर वो यम जी ऐसा बोला जाता है कि वो परीक्षा कर रहे थे नचिकेत की। तो ये जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए इतना लालायित है, उसके लिए पात्रता है कि नहीं। तो पात्रता है वो गुरु शिष्य संबंध में बहुत जरूरी है। गुरु का तो काम ही देना है, लेकिन पात्रता भी एक चीज है कि तुमने कितना डेडिकेशन है। कोई भी शिक्षा उसी को फलती है जो जहाँ पे डेडिकेशन है और जहाँ पे आपसी क्या बोलते हैं संबंध है, एक जो लेन और देन का। गुरु शिक्षा देता है, शिष्य शरणागति देता। तो ये ऐसा ये पर्व है। और ये ऋषिशवा नचिकेत और जो यम की कहानी है वो शायद पूरे ब्रह्मांड में पहले गुरु शिष्य की परंपरा की शुरुआत वहाँ से हुई, जहाँ पे यम ने नचिकेत को अपना शिष्य स्वीकार करके उसको वो आत्मज्ञान दिया जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत में दिया। तो ऐसा ये एक संवाद है जो एक इस परंपरा को एक दर्जे में बिठा देता है, जो ये सिर्फ यही लाइफ का नहीं है, जन्म जन्मांतर का है। फिनिश करने से पहले एक स्वामी विवेकानंद का उदाहरण देना चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस से लौटे तो उन्होंने पत्रकार ने प्रश्न पूछा कि आपके सक्सेस का मंत्र क्या है। तो वो बोलते हैं मेरे सक्सेस का मंत्र मेरे गुरु का ग्रेस है, मेरे गुरु की कृपा है, मेरे गुरु का अनुग्रह है, आशीर्वाद है। तो और फिर वो ऐसा आसमान में देखते हैं, बोलते हैं मेरे गुरु इतनी कैपेबल है, इतनी कैपेसिटी है उसमें कि वो 100 विवेकानंद पैदा कर सकते हैं और मैं उनकी चरणों की धूली के समान हूँ। तो गुरु का इतना महत्व, तत्व का महत्व है, गुरु का व्यक्ति नहीं है। तो उस आदर भाव जो स्वामी विवेकानंद का को था या नचिकेत को था, वही वैसा ही भाव में अपनी टीचर्स के लिए, जैसे फोक सर हो गए, जैसे राइटर सर हो गए, ठाकुर सर हो गए, शरद सर हो गए, राजेश सर हो गए, मैं उनको नमन करती हूँ क्योंकि उनकी वजह से मैं जो हूँ आज हूँ। उनको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक शेर सुनाया जाए। मुझ में जो कुछ अच्छा है सब उसका है,
मुझ में जो कुछ अच्छा है सब उसका है, मेरा जितना चर्चा है सब उसका है। आगे भी है। उसके नूर से मेरी आंखें रोशन है, मेरा जितना जलसा है सब उसका है। थैंक यू। As Samta ma'am rightly said, it's a grace. So it's my privilege and it's my honor to invite Mr. Shrikant sir to share his valuable guidance, to give his knowledge to us. Before I start on the subject, what are the basis or basics that you require to build on this subject? Let me tell you basically where astrology is concerned. It is simply a story of 9 planets and 12 houses. But it is also a story of a very large number of permutations and combinations. And the number of permutations and combinations are so many that if you miss seeing a very simple thing in the chart, you will find that your entire prediction has gone wrong. I'll use simple examples of my lifetime. I was a regular subscriber to astrological magazine, and in the October of 84, B.V. Raman's editorial note said that there will be a change of government by the end of this month. Now, those were the days of Indira Gandhi's emergency. We had seen her emergency. So there was no question of any replacement for Indira Gandhi. She was more man than man, and her entire cabinet was nothing more than wafadars, as we say, servants. Nothing more than that. She was so politically powerful that if she wanted, she could simply take a 4th standard pass or not passed character like Gyani Zail Singh and make him the president. But the prediction surprised me that B.V. Raman should write in this way. And truly on the 30th, Mrs. Gandhi was assassinated. There was a change of government. Now I am bringing this out simply because these are the instances where people like B.V. Raman were bold enough to write that, because in those days there was operation of Tada. If anybody would have written anything spiteful against those in power, he would have gone inside without bail, with jail guaranteed. And Indira Gandhi's jail was something which people have written in their memoirs. It's better to die than to go to jail. Anyways. Now in the course of the same study, I saw the predictions made by K.N. Rao. In 2008, he very nicely predicted that the government of Manmohan Singh will go. He gave an explanation that whenever Saturn is in Rohini, the crown does not remain where it is. But in 2008, almost the government fell on the US nuclear deal. But in the last moment, thanks to our scheme of defections, the purchase and sale of MPs, the government survived. But the principles of prediction were put. The government, which was stable, which had numbers, was on the verge of falling. So how does one predict so well, so nicely? They predict it by not forgetting the basics. The problem which I encounter, I teach the final years, is that people are busy learning and unlearning. I just told my class the last week, it was said of the Bourbons, that is the royal family of France, that they forgot nothing. When somebody asked, why is it said like that? The foreign minister replied, he said they forgot nothing because they learnt nothing.
So, coming back to my subject, it should not happen that सवेरे पाठ हुआ और शाम को सपाट हो गया. So, you must ensure that at least the 9 planets and the basics of the subject you must know. Second thing is that Bharati Vidya Bhavan you are taught Sayana also, you are taught Nirayana also, you are taught all this. Now I have seen many students mix up both. Please don't do that. Okay? You may learn many systems of prediction, but let me assure you that you will do very well if you are thorough with one system. Each of them is competent to give you correct predictions. I tell you a reason. Now it is possible that in Sayana Jupiter is debilitated, but if you apply and reduce the ayanams, Jupiter comes to his own house in Sagittarius. Likewise it happens with Venus, because its own house and its house of debilation are just close by. So therefore stick to one method. Now as you all are studying, there are many things that you will have to learn yourself. I'll tell you the reason. Astrology is not uniform throughout India. Take for example one important aspect. The house of the father in South India is the 9th house. In North India it is the 10th house. Now this is one very big difference. Now I personally feel that the South Indian system is correct for 2 reasons. The 10th house, which is known as the Karmasthana, is actually the house of placing the pinda, or those who are supposed to do the shraddha. And 8th house happens to be the house of inheritance. So you would get inheritance when the 8th house is operating, and that is 12th to the 9th, and therefore loss of 9 is gain of inheritance. So therefore you will find many such differences. Now another important aspect, if you see, in South India a lot of importance is given to extra Saturnine planets like Mandi and Gulika. But again if you see, there are some people who say Mandi and Gulika are same, but there is a difference in the method of calculation. And those people who have done medical astrology will realize that they put more emphasis on Gulika, because there is a concept of Pramana Gulika which is seen for finding out sicknesses which arise in a person. So how will you study, or how will you keep up with this? Now for that, the first thing is, please donate or put in some time every day. Many people are Sunday students. So therefore what happens is, what was studied on one Sunday is forgotten the next Sunday. We are back to square one. Now that should not happen. So if you read a small amount, half an hour, 1 hour, whatever you can spare per day, you will definitely build up on what you have studied. That is the first thing. The second thing that is very important is that you must not forget the nature of the planets. What is most important is, each planet has got its own ability to deliver. Now take for example when we study Jupiter. He is supposed to be corpulent, he is intelligent, he is the Karaka of Viveka. He gives you wisdom. But if that same Jupiter happens to be sitting with Rahu, you will find doctors are created to run away with the kidneys of the patients. Among lawyers, you will find people like Ramjan Palani who will support any terrorist, as long as his fees are coming in. So they are no source of inspiration to society. They are only a source of perspiration to those who are good. So therefore, a same planet will give different. Again, when we come to Venus, Venus has been given 20 years in the Vimshottari system. Why has it been given 20 years? The reason is very simple.
He knew all the Vidyas, that included the Vidya of bringing the dead to life. The Mrita Sanjeevani Vidya was possessed by Shukracharya. But Shukracharya did not have any qualities of the Brahmina other than his learning. He loved meat, he loved to drink, and in the end the Mrita Sanjeevani Vidya also left him. Or in the sense he had to part with that Vidya only for the simple reason because of his addiction to liquor. So therefore, the life of these planets or stories of these planets are also worth reading. There is a very nice book, The Greatness of Saturn by Robert Svoboda. He has given a full description of the operation of these planets. Another important aspect is as you build up, you will be taught many things. You will be taught the Tajik Shastra, etc. Ashtakvar, Gemini. You will also be taught the Sarvatobhadra Chakra. Now, each of these are refinements or what you could say scaling new heights. They are supplementary to each other. So therefore, you must always remember that all your basics are something that you have to keep on repeating to yourself. Read the basics again and again. Because if you keep forgetting the basics, there is no way you are going to build anything higher than that. Now, each of them is very good. Now, many people think that Sadesati is very bad. But suppose during Sadesati, the 3 houses where Saturn is going to move has more than 4 points and the house has more than 28 bindus, as they say, you will never know that Sadesati has gone through. But it is possible that the third Saturn, which is supposed to be very good, and their Saturn has 0 points and less than 20 points in total, what he would not have harassed you in 7.5 hours, 7.5 years, he will do it in 2.5 years. So therefore, predictions that are made without seeing the Ashtakvar also are a failure. Another thing that you will be taught now in the 3rd year, earlier it was the 5th year, was the Sarvatobhadra Chakra. Now Sarvatobhadra Chakra is actually a real refinement to the entire process. See, when we study a chart, we study it as 12 houses and 9 planets. But when we study the Sarvatobhadra Chakra, it is virtually 27 kgs, that is the nakshatras, the 28, and afflictions to the nakshatra and the nakshatra charan, that is the Navmas, is what can be seen. So when you apply the dasas to that extent, you will be able to pinpoint the various periods which you will have a difficult time. Okay. So therefore, in this entire process, keep up the process of adding something more to what you have learned and do it on a daily basis. Learn something more. Take any one book of Bharati Vidya Bhavan published by the Delhi chapter. Even the basic book is good enough. And read one thing. Now there are many methods of prediction in every system. Now I teach Gemini. Many people think and claim and proclaim, mostly those characters on WhatsApp University, that all the predictions can be done simply by reading Gemini. It is not like that. Gemini is actually supplementary to the Parasara system. You create another level of distinguishing the planets, those that are useful, those that can create hindrances, and then your calculation becomes correct. Another important thing that I would like to bring about today's high-tech and savvy astrologers have got the ready programs. Let me tell you by my own experience that if you only see that your tablet or computer or your mobile and start giving predictions, you will miss many things. You may see the planetary positions on your computer, but please write them down.
write the Rasi, write the Navmans, write the 7 Karakas, write the Dasa, Antardasa. When you are writing this, the Rasi chart and the Navmans chart will tell you many things, which it will not tell you when you are simply glancing on that. Another example I will give you, there was a person, I just discussed that with my class today. He was Sagittarius ascendant with Venus in the 11th house. And every astrologer had told him that the Venus Dasa will be straight away in the 7th heaven. Ashtak Varga of Venus was also 5. The 11th house had 32 points. But he had gotten into serious trouble when Venus set him. The excise department was behind him, the GST was behind him, the customs were behind him, all the old sin sets are faced. Old sins have long shadows. So therefore, when he came to me, the first thing while writing down his chart, I found that although Venus was in Libra, the 11th house, in the Navmans that planet was in Taurus. The Nidanamsa of every planet is the 8th house to it. So therefore in the Navmans, if that planet has gone 8th to itself from the basic chart, you can be sure that that Dasa is going to be a Rikta Dasa. And if you can manage to salvage what you possess, that will be a really big achievement for you. Otherwise it will become a Dasa of illusions. Anda pise or putta khai. Okay, there is nothing to gain and work on. Second thing is, many people believe that astrology should be seen on a daily basis, hourly basis. I never do that. Okay. In any case, being a lawyer, I am dependent on the court counter opening and closing. So therefore, Mura doesn't work over there. But even otherwise, this knowledge is only to see what are times that are good or bad, and whether the place is conducive or not conducive. The great Chanakya writes, why the importance of time? So he gives a very nice example. And he says that the crow and the owl are enemies. Both know what times they should not be going outside. The crow is never to be seen at night and the owl is never seen during the day. So therefore the importance of time, that astrology will take. Importance of place, there Sundar sir will illuminate how you can change your place and change your fortune. Why is it important? So again he gives an example of two animals, the alligator and the elephant. The alligator is strong in water. When the elephant enters the waters for his bath, the alligator simply catches his leg and takes him Patal Darshan. Job is over. Breakfast for many of them. But if that same alligator were to come on the shore, well, his face will become like a kakra in no time. It will be absolutely flat. Okay. So therefore the importance of time, importance of place, all these things work out. And that comes by a continuous study. Another important aspect you must remember is that you must apply it also in a chronological order. Now again coming to Ashtak Varga, I am sure second years and first years are not knowing this. You will do it. The same thing I saw in North India. Many astrologers convert the Dasapati as an ascendant, then make a Chalit chart, and then apply the transits and the planetary friendships on that and tell you how that Dasa is going. So many people have, by the oral traditions, created many such innovations for very nice predictions, correct predictions. Again, we did not really have a very good culture of research in it. The problem was there because many of the manuscripts were in Sanskrit, very difficult Sanskrit.
Then if there was somebody who could translate it, he would not know astrology. So therefore, import of the translation is lost. I had the good fortune of once talking to Mr. Chandubhai Patel. I went with Professor Antony and others. And we discussed one book named Vidya Madhavyam, which discusses that when somebody is born, every tithi is connected with some rashi which get born. So therefore, even if there is a planet that is exalted in that rashi, that dasa will give you nothing. It is known as the Dagda rashi. But he said in that translation it cost me so much trouble, because he said I could not follow that Sanskrit. And the Sanskrit Vidwans whom I bought could not actually give effect to that translation. So that is a difficulty that we have had. Luckily we have got the Bharati Vidya Bhavan at Delhi, which is entirely dedicated to the Virat system. They are doing a lot of work in this. They have published a lot of books also. The students have also published a lot of books. Some of my students sitting here have just told me that they are doing PhD in medical astrology. So I said, please follow Dr. Charak. He is a FRCS doctor himself who has studied astrology very well. His 2 books of medical astrology are really a gem. There you will find that in spite of being a North Indian, he has applied Gulika and Pramana Gulika in the entire chapter of medical astrology, when the sicknesses are bound to rise. So please don't keep yourself restricted to textbooks here. Today we are in the age of notes, there is no reading. So please don't do that. Read extensively. The best thing that you all have is our library. Teachers have limited time with you all. But we have some of the best books with the best translators. So I always tell my students, please go up and look the books of Subramanian Shastri. His translations are fabulous. He was a Raj Jyotisha, even the Britishers could follow him. And his translation of all those classics are really fabulous. Please go through them, read them, and just don't read them. Apply them on charts. Then you will know the real difference. Second very important thing I would like to tell you is, in these days of show off and propaganda, the first and the most useful trait of an astrologer is humility. Because this subject itself is reportedly has been cursed by Shivji himself as Pancham Bhavati, Pancham Nar Bhavati. That means your predictions will come 50% correct and 50% it will fail, because astrologers had tried to use that Vidya against Shivji itself. So he saw that these characters who are now believing themselves to be Brahma themselves must be cut down to size. So he did that. And therefore, if you see, B.V. Raman always used to write in his magazine, who other than Brahma will know what will happen tomorrow? That was his humility. A man who had studied so much, who had the opportunity to speak even at the United Nations on astrology, which is written off as a snake charmer's theory. Second thing is, before I wind up, take the good in every system. Let me tell you, the Tajik that you all study is not of Indian origin. Many people today claim, but it isn't so. It is known as Tajik Nilkanti, because it was taught by the Yavanas. In those days, non-Hindus were known as Malichas. They are referred to as Malichas. If you see the remedial measures for Rahu, it is written that Malichon ko daan. Now then there was no Islam, there was no Christianity, none of this was there. The Yavanas were there, the Greeks. And this Vidya came from the Greeks. It was their system of doing the predictions on a year-to-year basis. It is really very useful. The second thing is application of declinations when you are doing your predictions. Declinations can show you two things, conjunctions and oppositions.
please utilize that when you are doing your predictions. Two planets may appear to be together, but if the declination is not common, you will find that the good results of that conjunction will not fructify. Second thing is, in Parasari, the applying and separating concept is not there. But if you see very carefully, this principle that is applied by the Tajik people works perfectly when you want to apply and find out whether the Raj Yogas really have potential or not. Okay. So with this, I wind up. The time given to me is over by 2 minutes. Okay. So thank you all for being. Thank you so much, Shrikant sir, for such a wonderful insightful session. Now I would like to call our Sundar sir, the most Nadi expert, in-house Mundan expert. This is widely used in two topics. One is the relocation, especially when you want to relocate to some other new place from where you are born. And second, it is used in the mundane astrology very widely. This was developed by a person called Jim Lewis, who was in California. He's got a wonderful book titled Astrocartography. And that book, which is there, that was the one which is followed by a lot of people all over the globe. It is not yet explored in India as such. A lot of people even doesn't know about what does it mean. When it comes to astrology, what we are doing, it tells you a question as when. When means the timing of the event, when. But when it comes to astrocartography, it talks of where, the place. Okay, there are the two different meanings to it. But why this astrocartography has become so important? Because you have to know, see, you are born in some place, but you relocate. I'll give an example. There is one client who had come, born in West Bengal, Kolkata. Degree was at 5 degrees of Libra, but now settled in Mumbai. What you have to actually do is, you cannot use a birth chart when you are staying in Mumbai. You cannot use the chart of Kolkata, because you have to change the ascendant with the latitude and longitude of Mumbai. Then what will happen is, the Lagna itself will get changed to Virgo. So what is the ascendant? Ascendant nothing but the place where you are born, and from there it is the photography of the sky of all the planets above and the below. That is what is your horoscope. But when you are getting relocated to some other place, how can that horoscope tell you what is going to happen when you are staying in a different place? It cannot. So you have to use a chart where you are now currently located. That is the right horoscope that will give you the prediction of all the events. Now here comes the subject of astrocartography. Here astro is astrology. Carto is nothing but the map. In Greek, chartis is known as in Greek. And that is renamed as cartes. And that is how astrocartography is given as a name. Now what we do is, there are different methods for individual and different method for a mundane perspective. Now when it comes to individual, when you relocate the chart from the place where you are born to a new place, you have to take the equivalent time of your birth to a place where you are going to get relocated. Suppose if there is a 10-hour difference between
a place where you are born and the place where you are going to get relocated. So you have to have the equivalent time of birth of that place and then erect the chart. The idea is the moon degree should be same in the birth chart as well as in the relocated chart. Dasha will also be remaining the same. What will happen is the ascendant will change. So the starting point will change. Based on that, what will happen is you will know where you will shine and where you will not shine. And from that perspective, this astrocartography is taken out. Now when it comes to mundane astrology, here it's a different concept here altogether. In mundane astrology, there is a map called geodetic map. Geodetic, geodetic map. Now this is a very old concept given by Ptolemy. What he has done simply is, he has taken the map of the world and taken GMT as the reference point, and from there he has broken up every country by sign wise. Now if I give you the map of the world, you will see how it has been divided. You can see now. See here, it starts from Aries here, correct? Mid-heaven. Now what is this? It starts here is the London here. This is where it is 0. GMT is 0. From here, that is from here, is Aries mid-heaven. Now what is mid-heaven here? Now top you will see some as M, A, M, A. M is the mid-heaven. Now what is mid-heaven? This is where the geodetic chart comes into the picture. And it is calculated based on the longitude of the place. Suppose for our Delhi, India, it is 77 degrees east. Okay? So when it's 77 degrees, you have to reduce 60 degrees, you will get 17 degrees of Gemini. Correct? So our India is here. In this portion it will come. 0 degrees of Gemini to 0 degree of Cancer. It is the place where all India, Nepal, Afghanistan, part of Iran, part of China, all these are here, located here. Okay? Now this is the mid-heaven, meridian cusp, 10th house. Taking this, that is 17 degrees of Gemini, as the geodetic MC, you have to take the latitude of the place and calculate the other cusp. That is how you get the geodetic map. So the cuspal of the India independent chart, which you know as per China is 0 degrees of Gemini, it will not be 0 degrees, it will be something else. Now what will happen is, this is nothing but the fixed, it is given as the standard bifurcation of the whole globe. Now when we do the individual chart, it is from the earth we are seeing where the planets are located up above and down below. But in astrocartography what we do is, the view is from the top, not from the sun, not heliocentric. It is from the top where a planet is located at which place. Okay, the difference is the viewership. Here the view is from the earth as a reference point, and there it is from the top. You see where the various planets are located in each and every place. And that is how this particular map will be useful for you. For example, now Mars has entered the sign
Uranus has entered the sign Gemini now, as per sign now, from today I think. Okay. Now Mars has entered the sign Virgo. Correct? Mars has entered the sign Virgo. That means the ascendant here of India and all those places will fall from here to here, here to here. The day when Mars changed the sign, came to the sign Virgo, the YouTube channels of all the Pakistan based channels, everything was it was blocked. On the day when it entered, everything was open, there was a confusion. And they started fear-mongering again. And they blocked it. This is the effect when Mars came here. Now when you see Mars just comes here during this stay for the next 45 days, you will see lot of Mars effect in these places. Like fire accidents, like explosions. You saw one explosion in Telangana now? There was a gas explosion, 34 people died, 37 people died. Mars entered here. Now Mars is entered even in Karachi now. Mars is in Karachi now, Mars. Okay, it is here in this place. Now what will happen is, this planet when it moves from here to here, the effect of Mars will be there. Similarly, in the mid-heaven, there is Uranus which is now moving from Gemini, and Uranus will stay for quite a long time. You will see a lot of development in the governance in these places. A lot of rulers there will be a lot of attack on rulers. Rulers will have the change of governments. All these things will happen here now. Because Uranus is going in the 10th house, that is the Meridian cusp here. Okay? Now what I will do is, I will give you 3-4 examples of using geodetic map, like Ahmedabad plane crash. Okay? Now for that what I will use is the Gujarat map, Gujarat chart. Okay? To find out of each and every state, the map of, that is the chart of each and every state, you have to do one simple thing. Go to Google and find out formation of so and so state, you will get immediately. Okay. Now here the difference what I do is, I just take the geodetic. That means now you see Gujarat. Ahmedabad is 72E37, you can see here. You can see here 72E37. Can you see? Yeah. Now 72 means what? You reduce 60 degrees. That is Aries and Taurus. You will get balance is 12 Gemini, 37 as MC. Correct? Taking this into account, you will have the ascendant as 12 Virgo. Now Mars will enter at 12 Virgo here. Mars will enter. Mars will enter here. You will notice when Mars enters at exactly 12 degrees nearby, you will find some accident, something or other happening in Ahmedabad, in Gujarat. Got it? I am not using the ascendant based on the time here. There is no time here. Time I am not using. I am using the geodetic, that is the reference point of the longitude. And with the longitude, using the latitude, from the tables of houses, I find out the other cusp. Based on that, now the attack happened on June 12th, correct? I will put the transit chart on this. Now you see. See what is there? The third cusp is what?
Third cusp is at 11 degrees, right? Now you see the aspects. You will find the planets in angles here. You will find all the planets in angles here. Now, what is third cusp here? Is Scorpio, right? Scorpio, right? Now you take Mars. You see? You can see here what is happening. Over the Mars, that Mars is, you will see the transit 23 degrees here, first and foremost, 23 degrees. It will come in close contact with Rahu Ketu, or you will have the Mars is the third house of the communication sector. The Rahu Ketu is exactly close to that. Exactly close to that. And you will also find the ascendant and MC also getting afflicted here always. And some planet or the other, moon or the ascendant degree or the MC or the 7th cusp or the 4th cusp, these angles will be afflicted by the transit planets. Now the third house cusp Mars is afflicted by the transit Rahu. 21 degrees in the natal chart and 22 degrees in the transit on the 12th of June. Okay? So this is the Ahmedabad crash. Now on 31st October 1984, Indira Gandhi was assassinated, right? I will take India chart. See, this is again geodate 17, Gemini 13, correct? I cannot forget that day, this day, because I was traveling to Patalganga this time when I was in an audit. I remember this day very well. See the 10th cusp. Mars, you can see Saturn, Uranus, Pluto. Can you see this? MC, afflicted. Can you see this? See, I told you, Ketu over that Rahu, exactly same thing. Can you see this? You can see the figures, no? That's clear? Is it clear? It's clear now. It's clear now? See. Can you see this? Rahu Ketu ke upar se? And MC has been afflicted by so many planets here. You have Uranus exactly on the opposition here. Correct? You have Saturn, quincunx. You have Neptune, Pluto, sesquicadrid. All this MC is getting afflicted here on this day. Similarly, day before yesterday, there was a huge flood in Texas. The chart of Texas. See now. See here. Both bright है उधर का light. Exactly. Oh. That was cutting. See, in this case, Rahu and Ketu. Again, see Rahu Ketu.
Rahu was going over Neptune here. Now today start. Even today also there is a lot of damage there. And see, Rahu is, Ketu is 20 degrees, MC is 22 degrees, you can see. And the ascendant comes to 17 Pisces, descendant is 17 Virgo, over and over that within 3 degrees Rahu Ketu is going. Correct? And see the 4th house cusp, which is natural calamity. 4th house cusp is 22 Gemini. Rahu and Ketu is exactly T square. So point I am making is, this particular chart will give you an event to the T. Exactly you will get. Now you will note for some days, for 45 days, you note the transit of Mars. It is going over Virgo. It is going in all these places. You will see a lot of fire accidents, lot of explosions. You will find that in the next 45 days. And this is the map. Now coming back to how to decide where to relocate. Okay. Now I want one chart from somebody. I will put this, then I will tell you where to relocate. Can everybody hear me? This is a chart. This gives you the time as to predict the events. But he wants to know where he can relocate. Right? I simply go here. Okay? This is the map. Now see, he has to choose a place in mid-heaven, MC, okay, where there is a benefic planet. He can go to, say, Jupiter mid-heaven here, this place, okay, Jupiter mid-heaven, and this is the place where Sun is also in the descendant, crossing here. You can see here, Jupiter is coming this line, coming through this line, and Sun is also crossing this. So this is a place where in the descendant there is Sun, in the mid-heaven there is Jupiter. Okay? Similarly, he can choose Jupiter in the descendant if you want to have a nice wife, okay, or Venus in the descendant, or if you don't want to marry, you can have Pluto in the 7th house, not a problem. Okay? So Mars, Jupiter in the descendant, so all these places will be good for it. Okay, Middle East, Europe, and all those places. Now here, this place, Mars is in the IC, that is 4th cusp. Okay. Now Mars in the 4th cusp will give you property and all that, but at home it will not be a good proposition to have Mars in the 4th cusp. But Jupiter in the descendant is fine. Okay, if he wants to start some business or something on his own. So Jupiter here is fine. Okay. Now, if he wants Sun also he can have. This is the place. Sun is in the, not Sun, Venus. Venus in the IC here and Jupiter here. This place would be good for him. Venus in the 4th cusp, Jupiter in the descendant here. Similarly, he can go to say Mars in the mid-heaven. Okay, give you position Mars in the mid-heaven here, and Sun in the ascendant. This also could be a good place for him. Okay, now Jupiter in the ascendant here, and Sun in the mid-heaven. See, this is the best place, but here there is no place here. But you can choose Jupiter in the ascendant and Mercury in the mid-heaven. This is also a good place, North America. This place, to zoom it, that place will be good for him because it is Jupiter. See this place we were talking about, North America. Now if I zoom there,
Canada, right? Yes, sir. This place. You can see Jupiter is coming here. This Jupiter line. Jupiter line here and Mercury. This is a good place for it. This place. Correct? So this is what is the beauty of astrocartography. Okay? Any questions here? Yeah. So what will happen is, you will get the mix of both. If you have benefic planets in both ascendant and the midheaven. Now there are also known as Parans. Parans is where both rise in ascendant or midheaven. Midheaven, IC and descendant. There is Paran. Paran is different. Okay. So that also is another methodology, but that is a very detailed one. But what you can do is, this itself will give you a lot of benefit. Okay, if I relocate this chart, you will exactly find that the Mercury will be in the 10th house. Okay. Now that you have to use standard map and the zodiac as per the planet. Yeah. Like you said, not the birthplace, but the place where he is located. I can hear you. Place where it is located needs to be taken into consideration while their ascendant remains same. No. See, moon degree should be same. Yeah. The point is, dasha will remain dasha, antar, pratyantar, everything will same. Okay. Ascendant will change. Ascendant will change. Now you are born in which place? Mumbai. Anybody born in some other place and settled in Mumbai? You are born where? Yeah, that's Kutch. But ascendant degree क्या है? वो change नहीं होगा ना ज़्यादा. So mine has changed. Odisha. Here it will change. Okay, what is the degree? Now. So mine has changed. Which place? Bihar and the ascent degrees? 1058, na? Virgo. We have to do that. The time, see what you do is, I showed it to Samta madam. There is a website called Time and Date. Okay. There you have to go and put your birth date, time and everything. And you have to find out the equivalent time of that particular date. You have to put then it will give you the equivalent time of that particular date to a relocated place. Changing, no? So what is the ascendant you are coming? And earlier it was Cancer. So ascendant is changing. So you should use that chart for predictions, not the birth chart. Okay. But in this case, what is happening is, what will happen is, the birth chart itself will give you where to relocate. The map will give you where to relocate based on the planetary positions in midheaven and the ascendant and the descendant. इंडिया का वो इतना चेंज नहीं होगा, डिपेंड्स अपॉन द एसेंडेंट डिग्री. हाँ, दिस इज जानूस, JANUS.
We'll take one more questions. जो दो प्लैनेट का कॉम्बिनेशन है ना सारे जुपिटर या वो हाउ Jupiter, Mercury. बट इज इट स्टैंडर्ड लाइक जुपिटर एंड मर्क्यूरी No. I have decided that Jupiter in the ascendant and Mercury in the mid-heaven is okay, no? No, what is the rational thing? Logic is all benefic planets should be in the angles. Okay. Benefic planets should be in the angles. That is 1, 4, 7, 10. That will give you more prominence in the place. If you have Sun in the 10th house, it will give you power. Okay? If you have Saturn in the first house, you will be lazy, you will not be able to work. If you have Saturn in the 10th house, you will be workaholic. So basically we have to choose that part of the area of that world where in 10th house where there are good planets. Good planets. Okay, got it. Thank you. So Natural. No, that's what I'm saying. No, see, date and time will change depending upon the place where you get relocated. Suppose if you go to Netherlands, okay, the time will certainly change. The time difference is there, no? The time difference is there, and that point that day when you are born, there could be daylight savings also in that country probably. So we don't know. So you have to find out from that time and date, that website, you have to find out what is the time of birth of the relocated place. Yeah. Vertical line is the meridian cusp, and the planets are in the mid-heaven that time. In those countries where you are born in India, but Jupiter, in your case, see, now here you have Jupiter the 10th house, correct? Jupiter the 10th house, no? But this Jupiter, when you relocate this chart, Jupiter will come to 4th house. You're getting me now? The Jupiter can come to, Jupiter will take will be placed in some other house. Yeah. The lines is the crossing line, ascendant and the, see. Yeah. See, this is what, this is geodetic. This is geodetic here. Okay. Now for individuals, you can take Z and this. You will find this will change. Saw this? Okay. Now here Jupiter is in the IC. Mars is in the ascendant here. Now there is a crossing here of Venus and Venus in the ascendant, and there is a Jupiter in the IC. There is a crossing here. At the time of birth, at that place, Jupiter is in that country. Correct. Correct, you are correct. Now, see, in your chart, what is happening is Jupiter is here. But this is not the place. This is the time. When. But where is given by this map. This map tells you where you relocate. If you relocate to this place where Jupiter is there, Mars is in the mid-heaven, you will get more power. But in this map, Mars is not in the mid-heaven. In your birthplace, Mars is not in the mid-heaven. Mars is somewhere in the 6th house, 5th house. But when you relocate, this Mars will come here. So is that not good for you? For the position? It is good. Yeah. Got it? Okay? Thank you so much, Sundar sir. So now I would like to invite Jyotisha sir and Vishal sir for the guidelines of alumni.
शुभेच्छा। यहाँ अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ और कुछ अनाउंसमेंट मुझे करनी है। उनका जो मुख्य सब्जेक्ट जो है वो एल्यूमिनी के बारे में है। मुझे पता है बहुत सारे जो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट ईयर को बिलोंग करते हैं, सेकेंड ईयर को बिलोंग करते हैं, तो मे बी उनको पता नहीं होगा एग्जैक्टली एल्यूमिनी क्या है। बट एल्यूमिनी ये सब्जेक्ट जो है वो ज्योतिष भारती के लिए कोई नया नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास में एल्यूमिनी है। तो आज हम यहाँ क्या एक ऐसी अनाउंसमेंट करना चाह रहे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक ब्रीफली बताऊंगा और आफ्टर मेरे बाद में इसमें और थोड़ा सा डिटेल में जिमी सर भी बताएंगे। तो जैसे मैंने अभी आपको पहले बोला, हमारे पास में एल्यूमिनी तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, बट ये जो एल्यूमिनी है उसमें हम लोग कुछ एक नया रिफॉर्मेशन चाह रहे हैं, एक नया कंस्ट्रक्शन हम उसमें चेंज करना चाह रहे हैं। जो ये रिन्यूएबल एनर्जी है वो हम उसमें भरना चाह रहे हैं। सवाल ये आएगा कि ये ज़रूरत क्या है, ऐसी कौन सी ज़रूरत है कि जिसकी वजह से हम ये रिफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं। तो एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो रही है, हम ये जो रिफॉर्मेशन कर रहे हैं उसके पीछे हमारा एक क्लियर इंटेंट है, हमारे पास में एक डीप उसका पर्पस है, और दूसरी बात है हमारे पास में एक स्ट्रॉन्ग विजन है जिसके साथ में हम ये एल्यूमिनी में जो नया रिफॉर्मेशन कर रहे हैं। और उसकी सवाल तो ये भी आएगा, ऐसी क्या ज़रूरत होगी, ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम ये करना चाह रहे हैं। तो एक चीज़ तो बहुत साफ है, जब आपके पास में इंटेंशन साफ होता है और आपका गोल एकदम क्लियर होता है, तब जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे गोल की तरफ, हम लोग कहीं ना कहीं रुकते हैं और सोचते हैं कि हमारी ये जर्नी में ऐसी कौन सी मिस्टेक हुई है, क्या चीज़ हो रही है। अगर गलती हो रही है तो हम उस करेक्शन के पीछे जाते हैं, और जो ऐसी जो नकारात्मक चीज़ें हो रही है जो हमारी ग्रोथ को ब्लॉक करती है, हम उसे पूरी तरह से निकाल देते हैं। देखिए एक चीज़ इसमें देखना पड़ेगा, ये कोई हमारी कमज़ोरी नहीं है, ये कमज़ोरी को मत, इसे कमज़ोरी मत समझिए। ये एक्चुअली जो हो रहा है ये हमारा जो लाइवलीनेस है, जो जीवंत चेतना है, हम ये प्रमाण दे रहे हैं उसकी तरफ। हम लोग एक्चुअली लाइवली है, हम लोग उसके ऊपर सोच रहे हैं, और ये जो एक अंदर से एक आवाज़ आती है ना, जिसे मुझे और बेहतर करना है, मुझे कुछ और अच्छी तरह से अलाइन होना है, बस बिल्कुल यही एक आवाज़ अब एल्यूमिनी में आ रही है। और हम इसके लिए बहुत क्लियर विजन के साथ में हमने कुछ जो प्रोग्राम डिसाइड किए हैं उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अभी आप देखोगे करीबन 4 या 5 साल आप यहाँ ज्योतिष में पढ़ाई कर रहे हो, और 4-5 साल की पढ़ाई के बाद में आप कोई एक मुकाम हासिल करोगे, समाज में जाओगे और दुनिया में ये भी बताओगे, बहुत गौरव के साथ में बताओगे कि मैं भारतीय ज्योतिष भारती का विद्यार्थी हूँ। बट सवाल यहाँ खड़ा भी होगा, आप ये तो समाज को बता रहे हो कि मैं ज्योतिष भारती से बाहर आया हूँ, पढ़ के बाहर आया हूँ, लेकिन इसके सामने आप ज्योतिष भारती को क्या दे रहे हो। देखिए ज्ञान का जो ये जर्नी होती है ना, वो सिर्फ वन वे नहीं हो सकती है, ये तो दोनों तरफ से होनी चाहिए। कभी ऐसा भी होना चाहिए ज्योतिष भारती भी कभी बोले कि ये मेरा स्टूडेंट है। आप जब कुछ उपलब्धियां हासिल करते हो अपने जीवन में, तो वहाँ उस उपलब्धियों में कहीं ना कहीं ये भी होना चाहिए कि जो संस्था से आपने ये किया हुआ है तो उसकी भी गरिमा उसमें झलकनी चाहिए, उसका भी कुछ ना कुछ तो आपको उसकी जो ग्लोरी है वो आपकी कार्य में दिखनी चाहिए। तो ये एक्चुअली हमारी परंपरा रही है। तो जब हम लोग बात अभी परंपरा की कर ही रहे हैं, तो देखिए सनातन धर्म की, अगर हम सनातन विचारधारा की बात करेंगे तो ज्ञान की जब भी बात करेंगे तो ज्ञान के साथ में एक चीज मतलब उसकी शैडो की तरफ चिपकी है, दैट इज अ दक्षिणा। ज्ञान के साथ में हमेशा दक्षिणा आएगा ही आएगा। अब सवाल ये है, दक्षिणा मतलब कि दान की बात कर रहा हूँ मैं, दान की बात नहीं है यहाँ। ये जो दक्षिणा से शब्द हम लोग ये जो यूज कर रहे हैं, एक्चुअली ये एक
दिखा रहे हैं, वो उस ज्ञान के प्रति जो आदर है उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने जो यहाँ से ज्ञान प्राप्त किया है और उसके बदले में एवरेज में हम दक्षिणा किस तरह से दे सकते हैं। देखिए दक्षिणा देने की बहुत सारी मेथड है, इसके ऊपर बहुत सारा लिखा गया भी है। जैसे हम किसी ज्ञान से किसी को दे सकते हैं, या फिर किसी सेवा के बदले में हम लोग दक्षिणा देते हैं, या मार्गदर्शन करके भी हम लोग कर सकते हैं किसी को, या तो आपने जो पाया हुआ है, आपने जो ज्ञान पारसमणि होती है वो किसी को भी छू जाती है तो उसको सुवर्ण बना देती है। लेकिन कितना भी हो, वो पारसमणि में वो गुण तो बिल्कुल नहीं है कि वो दूसरा पारसमणि बना पाए, हो ही नहीं सकती। वो सुवर्ण बना सकती है, अमूल्य बना सकती है, लेकिन पारसमणि तो नहीं कर सकती। लेकिन गुरु के पास में एक क्षमता है, गुरु अगर छू लेता है ना, तो जैसे लाइट से लाइट जलाती है ना, बिल्कुल उसी तरह से एक दूसरा गुरु पैदा कर सकता है। ये क्षमता सिर्फ गुरु में है। और यही क्षमता की अगर हम लोग बात करें तो इसी परंपरा में अगर हमको कुछ देना है तो हम क्या देंगे? जो ज्ञान हमने पाया हुआ है उसी ज्ञान को तो हम लोग वापस रिटर्न कर सकते हैं। हमें एक्चुअली क्या करना है, हम कुछ ना कुछ ज्ञान, समय या फिर कुछ सहयोग, यही हमको वापस रिटर्न करना होगा। देखिए ये जो है ना, ये पुनरावर्तन प्रक्रिया है। हमने गुरु से ज्ञान लिया और जब उसी गुरु को उसकी प्रतिष्ठा में हमने कुछ योगदान दिया तो ये एक्जैक्टली उसका मूल्य हो सकता है, ठीक है ना। और जैसे हमने अभी मैं बात कर रहा हूँ हमारे जो एल्यूमिनी ग्रुप का है, हमारे पास में कई सारे उद्देश्य हैं, लेकिन ये उद्देश्यों में से ये भी एक प्रमुख उद्देश्य रहा है कि हम जिस ज्योतिष भारती की परंपरा को हम लोग बिलोंग करते हैं उसे एक सम्मान देना और उसको आगे बढ़ाना, ये हमारा एक प्राइमरी मोटो है एल्यूमिनी ग्रुप का। वैसे तो बहुत सारे हमारे ग्रुप के जो फाउंडेशंस, जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं सभी के बारे में बहुत डिटेल में बात नहीं करूँगा, वो तो जब आप इसमें जुड़ेंगे तो उसका पूरा लिफलेट है वो मिल जाएगा। बट एक रफली एक उसके ऊपर मैं एक आउटलाइन देना पसंद करूँगा। हम जब बात कर रहे थे और सर ने जब श्रीकांत सर ने जब बात किया था, बहुत अहमियत वाला सब्जेक्ट भी उन्होंने उठाया था। हमारे पास में ज्ञान की बहुत बड़ी सीमा है, मतलब बहुत सारे हमारे पास में उसके फॉर्म्स है, बट फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग उसको संलग्न नहीं कर पा रहे, हम लोग उसको कुछ क्लब नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग हो रहा है। तो हमारा ये उद्देश्य यहाँ भी है कि डीप रिसर्च और नॉलेज शेयरिंग, ये जो प्रक्रिया है, ये जो मेथड है, उसको हम लोगों को आगे बढ़ाना है। और उसके लिए भी ये एल्यूमिनी ग्रुप एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करना चाह रहा है। हमारे आगे के फ्यूचर के जो प्रोग्राम्स है उसके बारे में मैंने पहले बोला था कि हम लोगों का ये जो प्रोग्राम, अभी जो रिफॉर्मेशन है बहुत सोच समझ के किया जा रहा है, ताकि अभी जो रिसेंटली जो वर्तमान में हमारे जो विद्यार्थी है या फिर आगे भविष्य में जो आने वाले विद्यार्थी है, उनके लिए भी एक मेंटरशिप प्रोग्राम्स के बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं। और वो ये एल्यूमिनी से ही हो सकता है, क्योंकि आप वो लेगेसी से जा रहे हो, आपने ऑलरेडी वो ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, आपने यहाँ की जो फैकल्टीज के साथ में रह के वो चीज़ों को समझा है, तभी तो आप आगे हम दूसरे जो विद्यार्थी आएंगे आप उनको वही पैटर्न में वही नॉलेज दे पाएंगे। अदरवाइज तो फिर कन्फ्यूजन तो बहुत बड़ा ही होता जाएगा। तो वो कन्फ्यूजन कम हो और जो स्टूडेंट हो, क्योंकि जैसे अभी सर बात कर रहे थे, एक फैकल्टी एक सर्टन लेवल तक काम कर सकती है और वो नॉलेज शेयर कर सकती है, क्योंकि उनके पास में भी लेक्चर्स की काफ़ी मतलब एक घंटा रहते हैं और एक घंटे में उनको कई सारे सब्जेक्ट को उनको कवर करना होता है। तो ये जो उनके स्टूडेंट्स के जो डाउट होते हैं, वो डाउट्स को अगर उनको क्लेरिफाई करना है, तब ऐसे कंडीशन में ये जो हमारी जो लेगेसी है, ये जो हमारी जो एल्यूमिनी ग्रुप है, वो उनको बहुत बड़ा हेल्प सपोर्ट कर सकती है। ज्योतिष से जुड़े हुए जो भी इवेंट्स है या डिस्कशंस है या फिर पब्लिक प्रोग्राम्स वगैरह, ये सब ऑर्गेनाइज करना, ये भी एक मकसद है हमारा। और सबसे अहमियत तो मैंने आपको पहले बताया कि एक परिवार की तरह जुड़ना, ये हमारा एक मकसद रहेगा इसमें, और वो हमको करना ही करना है। अब जब हम लोग ये एक आउटलाइन की बात कर रहे हैं, तब सवाल ये भी आएगा कि हम इसे किस तरीके से रहें आगे, मतलब कंडक्ट करने वाले
क्या हमारे पास में इसकी कोई अलग सोच है कि किस तरह से हम ये प्रोग्राम को रन करेंगे। तो इसके लिए बहुत सारी ऑलरेडी जो कोर कमेटी वगैरह है, इन्होंने कई सारी चीज़ें सोची हुई है और इसके प्रोग्राम्स के बारे में भी सोचा है। मैं वो सब अभी डिस्कशन नहीं करूँगा, आपको एक रफली मैं सिर्फ आगे एक आउटलाइन देने के लिए आपको ये बताऊँगा कि हमारा जो मेन कोर मकसद जो है, जो अभी मैंने आपको बताया था कि डीप रिसर्च के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, डीप रिसर्च का पर्पस और किस तरीके से ये होगा। क्योंकि एक्चुअली अगर आप देखोगे राइट नाउ हम लोग यहाँ 4 साल या 5 साल जो पढ़ रहे हैं, आप एक ऐसी कल्पना कीजिएगा ये एक्चुअली आपका एक ट्रेनिंग सेशन जा रहा है, सिर्फ ये ट्रेनिंग ही हो रही है। जैसे आप मिलिट्री में जाते हो वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, बिल्कुल बस वही ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग होना और एक्चुअली बैटल फील्ड में जाके, वॉर फील्ड पे जाके काम करना, ये दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। थियरी तो सीख लिए, इंजीनियर तो बन गया हूँ, लेकिन किस तरह से अप्लाई करना उसके लिए तो कुछ ग्राउंड चाहिए। और ये ग्राउंड देने के लिए भी यहाँ हमारी जो प्रिंसिपल मैडम और सुमन सर ने एक काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च किया और काफ़ी इन्होंने मतलब क्या बोलूँ, पूरे दिमाग को झंझोड़ के रख दिया है और इतनी सारी चीज़ों को डाला हुआ है कि नहीं ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन होने ही चाहिए। तो ये सब हम काफ़ी पिछले 6 महीने से हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और उसमें से जो कुछ आउटकम निकला हुआ है वो आउटकम इस तरह से आया हुआ है कि जो स्टूडेंट एस्ट्रोलॉजी फील्ड में काम कर रहे हैं, हमने ये देखा हुआ है कि हम ज्योतिष भारती में तो हम कई सारी ब्रांचेस सिखा रहे हैं। ज्योतिष की जितनी भी ब्रांचेस है ऑलमोस्ट मैं मानता हूँ कि ये यहाँ मुंबई चौपाटी भवंस में तो हम लोग सिखा ही रहे हैं जो भी एस्ट्रोलॉजी की ब्रांचेस है। जैसे अभी सर बोल रहे थे कि दिल्ली में तो स्पेसिफिकली नहीं है ना, बट यहाँ की ब्यूटी बिल्कुल अलग है। आप बहुत सारे ब्रांचेस के साथ में काम कर रहे हो और ज्योतिष में अगर हम लोग सब्जेक्ट वाइज भी जब देखेंगे तो हमने कुछ फाइंड आउट किया हुआ है। जैसे आपको पता है हम लोग नेटल एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करेंगे या फिर हॉरारी की बात करेंगे या फिर मुहूर्त या फिर मंडन एस्ट्रोलॉजी, जैसे अभी सर ने आपको समझाया, फाइनेंशियल बिजनेस एस्ट्रोलॉजी, ये कई सारे ऐसे प्रकार हैं। कुल मिला के हमने उसको कैटेगरी वाइज किया है 10 कैटेगरी में। ये 10 कैटेगरी मतलब यू कैन से ये 10 महाविद्या जैसा काम है। 10 महाविद्याएं ही है बिल्कुल। हमने उस 10 महाविद्याओं को हम लोगों ने इस तरह से बनाया हुआ है और इसमें फिर जिसे जो और डीप निश में जाना है वो बिल्कुल जा सकता है। और इसकी ब्यूटी भी ये रहेगी कि आपको पसंद स्टाइल है, आपको नीलियाना पसंद है, आप नीलियाना के साथ में चाहिए, आपको साइना पसंद है, आप साइना के साथ में चाहिए, आपको केपी पसंद है, आप केपी के साथ में चाहिए। कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि जहाँ भी जाना है, जो भी सिस्टम के साथ में जाना है, लेकिन उसके साथ में बहुत डिटेल के साथ में आपको काम करना है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि डिस्कशन कर लिया। हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो आप डिस्कस कर रहे हो वो रिकॉर्ड पे आए और हम ये रिकॉर्ड पे लाने के बाद में इसे एक डाटाबेस बनाना चाह रहे हैं। ये डाटाबेस आज तो मतलब ये बातें लग रही है, लेकिन एक बात कहते हैं ना, जैसे एक आदमी ने चलना स्टार्ट किया, फिर दूसरा मिला, फिर चौथा मिला, इस करके जिस तरह से कारवा बन जाता है। बिल्कुल हमारे पास में भले आज कुछ नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पास में जो डाटाबेस रहेगा वो सही में मतलब एक कमाल का हो सकता है। और जो भी वो डाटाबेस है हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक माइंड मतलब मैकेनिज्म बोर्ड जैसा काम करेगा। तो इसमें हम बहुत डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे पास में पूरा का पूरा प्रोग्राम हम लोगों ने रेडी किया है। ये जो भी काम करेंगे, हमारा जो मकसद है, ग्रुप का मकसद जो है वो बहुत डिफाइन है। हम ऐसे कोई भी चीज़ के ऊपर केवल पोस्टमार्टम करके रुकना नहीं चाहेंगे। आज आपने देखा होगा बहुत जगह पे ये होता है कि पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम का मतलब मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि कुंडली निकली, मतलब जैसे अभी इवेंट हो गया, अभी मेरे ख्याल से हमारे क्लास में भी कई सारे डिस्कशन ऐसे होते हैं कि अहमदाबाद कांड हुआ तो ये इसका वजह ये हुआ है, ये पोस्टमार्टम है, ठीक है ना। लेकिन क्या अगर आप इतने कॉन्फिडेंट थे तो आपने पहले बता दिया था? नहीं बताया, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैंने ये शब्द यूज़ किया पोस्टमार्टम।
बल्कि हम लोगों को कुछ ऐसे सिद्धांतों को हम लोगों को खोजना है, उसको हमको चकासना है, प्रयोग में लाना है, जो पहले से ये चीज़ों की तरफ इशारा करे, जिसे हम लोग मतलब एक क्या बोलते हैं ना, अर्ली इंडिकेटर की तरह हम लोगों को यूज़ करना है। ये हमारा मकसद है और इसीलिए हम इस मकसद में कई सारी चीज़ों को हम लोग जोड़ के आगे बढ़ने वाले हैं। जो भी निष्कर्ष हम लोगों पर डिस्कशन में निकलने वाला है, मैं एलिमी ग्रुप की बात कर रहा हूँ, जो भी हमारा डिस्कशन निकलेगा या जो भी हम लोग उसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे, हमारी एक्चुअली एक चाह है, वी विल कंपाइल देम इनटू अ स्ट्रक्चर। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर में हमको लाना है और शेयर डाटाबेस हम लोगों को क्रिएट करना है। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि डाटाबेस में, ताकि जो स्टूडेंट वो सब्जेक्ट के लिए वापस काम करेगा तब उसके पास में वो एक रेडी रेफरेंस क्रिएट होना चाहिए। और ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए भी नहीं है, ये आगे आने वाली फैकल्टीज के लिए भी है, क्योंकि फैकल्टीज भी हमारी यहीं से आने वाली है, ताकि ये दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और इस तरह से बहुत सारे डिटेल्स के साथ में हमारा जो प्रोग्राम हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मैं हालांकि सभी चीज़ के लिए आज मैं बात नहीं करूँगा, मुझे थोड़ा सा छोड़ना भी पड़ेगा ताकि जिमेश्वर भी आगे आए और इसके बारे में कुछ आपसे बात करें। तो ये सब्जेक्ट को और थोड़ा सा जिमेश्वर भी आपसे शेयर करेंगे। मूड में आ जाओ, जोश में आ जाओ। एकदम डन है, एकदम। चलो इसके लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को वाइब्रेट करता हूँ। 2 मिनट अगर आप लोग के पास है तो खड़े हो जाइए। एक बार आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम गुरु को याद करते हैं। थैंक यू। हाथ जोड़िए, छोटा सा मंत्र है, 4 लाइन, आंख बंद कीजिए और याद कीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। टेक योर सीट। अभी सब लोग थोड़ा सा ऐसा मतलब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो ज्योतिषा भारती विद्या भवन मुंबई, ठीक है, ये हमेशा स्टूडेंट्स की रही है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास प्रिंसिपल मैडम है डॉक्टर उर्वी प्रसाद, ऑनरेबल सेक्रेटरी श्रीमद महाराणा, हमारे श्रीकांत जी, प्यारे सुंदर जी, और समता जी, अर्चना, विशाल, माइसेल, हम लोग सब यहीं के विद्यार्थी रहे। The winners for today। हम लोग सब यहीं के विद्यार्थी रहे, आप समझे। तो कभी किसी वक्त हम भी वहां बैठा करते थे उस बेंच पर, ठीक है। हमने भी सोचा था कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है। अब इतने समय के बाद हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है तो हम लोग आप लोगों से कुछ शेयर कर पा रहे हैं। बस यही वो चीज है जो ये ऑलुमनाई करना चाहती है। आप लोग सब, यू आर द फ्यूचर ऑफ ज्योतिषा भारती, ठीक है। ये कोई 1, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल का जर्नी नहीं है। वी आर 133 years ahead। कितना? 133 years। जब एक विंशोत्तरी महादशा पूरी 120 साल की पूरी हुई, ठीक है। 133 years, इसको और आगे लेके जाना है और आप लोग इस स्तंभ है। आप लोगों का कंट्रीब्यूशन, you contributing to Jyotisha Bharati through alumni। What is alumni? Alumni is a person who has passed out Jyotisha Bharati successfully, ज्योतिर्विशारद कोर्सेज, ठीक है। आप लोगों के राइटअप, आपकी सोच, आपका चार्ट डेलिनेशन किस लेवल तक, किस हद तक ज्योतिषा भारती को रिप्रेजेंट कर सकता है, उसको किस लेवल तक लेके जा सकते हैं। ज्योतिषा भारती देखकर पता चलना चाहिए कि ये स्टूडेंट ज्योतिषा भारती का है, यही इसी में वो ताकत है जो लिख सकता है। आपने देखा ना सुंदर जी ने जियो ये इस चार्ट के बारे में आपको कितने सारे सवाल आप लोगों के मन में शुरू हो गए, उसके बाद यूं ही हुए क्या। तो ये दिस इज द ब्यूटी, ठीक है। इसी को आगे बढ़ाइए। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आप लोग का। आई होप एवरीबॉडी इज रेडी फॉर द सर्टिफिकेट, ठीक है। ओके, तो कोशिश कीजिए। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन एज सच फॉर एनी टाइमलाइन, इवेंट और द डे टू मीट। ओके, इट इज अप टू यू how you can contribute to the best to Jyotisha Bharati
भारती विद्या भवन मुंबई. थैंक यू. What Dinesh sir said, I just want to add. So, what we are lacking, see, we are one of the prestigious institutions, but what we are lacking is our existence. Existence means in what form? We definitely online form में या offline form में हम available हैं, but data form में नहीं है. So, because I am coming from a technical background, I understand this part. We are not storing the data. Okay? So, अगर हम सबका mindset अगर ऐसा हो जाता है कि जो भी हम लोग बोल रहे हैं इधर, let's store in any format. In any way, say I will see it. मैं उसको कैसे मैं उसको निकालना, extract करना, कैसे use करना. That is something which we can do. We have an entire team for that. But the data is lost. So going forward, I'm just requesting everybody here. Just कुछ भी हमारी बातें हो रही हैं, let's try to store it. Let's try to store it. Any format is fine. If it is written, it is fine. If it is video, it is fine. If it is photograph, it is fine. Okay? Any format, let's try to store. Let's see कैसे उसको extract करें, कैसे उसको utilize करें. See, we are living the generation of online or maybe the internet. Okay, so यहाँ पर वो है. हम लोग का extents बहुत strong है. ठीक है, बहुत strong है. We have a solid foundation. No doubts on that. But ये थोड़ा सा इसको हम लोग और इसको कैसे usage इसका और बढ़ा सकें. तो सबको अगर वो डेटा मिलता है, like sir was saying there कि हाँ हम लोग एक चैनल बना लेंगे जो फ्यूचर स्टूडेंट के रेफरेंस में आए. अभी अगर द पीपल नॉर्मली ज्वाइन इन द फर्स्ट ईयर दे गेट लॉस्ट. कहाँ जाए, कैसा करें, कुछ रेफरेंस सिस्टम है क्या, नोट्स है क्या, सो दे गेट लॉस्ट. सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक इट एवरीथिंग स्ट्रीमलाइन. और हमारे पास ऑलरेडी इतना नॉलेज है, राइट. लेट्स ट्राई टू स्टोर दैट. दैट्स व्हाट माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन. कुछ होता है, किस भी होता है. इफ यू हैव एनी इश्यूज इन स्टोरिंग डेटा, कम टू मी, कम टू जिनेश सर और एनीवन इन एनी फैकल्टी. Let's try to store the data. That's the only request, and I think I will give the back to Sir. Okay, thank you very much. दर्शना राणा, राजाराम कालावर, कुणाल जोशी अपने, then मनमोहन दास, मनमोहन दास, प्रदीप कुमार शाह, आशुतोष दीक्षित, प्रदीप कुमार शाह. His son has came to take the certificate. He is a first year student also. Great. And he is also a first year student. Hetal Dave. तालियां कम नहीं करनी चाहिए. कल्पना चौगले. हाँ. श्रीधर अय्यर. श्रीधर अय्यर. योगेश्वर आचार्य. प्रियंक दलाल. भारती आहूजा. चिंतक शाह.
Now we will start with Jyotirved students. So now I would like to call Samta ma'am and Archana ma'am on the stage. Jyotirved students, Sonal Goradia. Second topper, Disha Modi. Third topper, Rohan Shah. Now the rest, Jyotirved students, Sameer Umrajkar. Mrinalini Pandit. Now I would like to call Jimmy sir, Vishal sir and Kunal sir on the stage to do the honors for the certificates. Krutika Shah. Navneet Kaur. Pinal Abhishek. Harshit Mishra. After this, Alpana Kedia is ready. Akshish Goswami. Dr. Trimurti Nadkarni. Aparna Shendre, please come near the stage. Radharam Gupta. Radha Raman Gupta. Ashutosh Vashish.
Okay, so now I would like to call Priksha and Kunal. Neeta Gandhi, Deepak Wadhwani, Jigesh Safari, Bhushan Matre. Nihil Desai. Priya Nayak. Nishit Mehta, Samir Shah, Sujay Naudwale. Krishna Goswami, Dennis Joseph, Library digital. anyone remaining? Jignesh Shah. I'm the real top one. Now we'll start with vote of thanks. First, I will like to call Vishala students. Amit Sachdev. Hello dear friends, hello everybody and respected gurus. जब यहाँ आया था तो I heard this story from Kacha sir that I mean ये ऐसा science है कि मतलब you get attracted to this science puts you towards yourself. I am the biggest example of this thing because I remember still I think January 5th was the first day of the college. And that day I had phoned this college, asking, saying, admission कब से चालू होता है? So they said, अभी चालू है. Why don't you come now with pen and paper and book and attend the class? First class I missed, second class I attended. But since then, I have stuck to this, science in such a way that not even a single day since then, I have been away from astrology. Not even a single day. And absolute thanks to all the professors, all the faculty here, all my fellow classmates. They helped me with this science so much. And I'm so grateful to all of you that thank you very much. Thanks a lot. Thank you. Vishal Shukla. 5 years into this subject, life has changed, and not only for me, I think for all of us who are sitting over here. The perspective to see, मतलब जो दृष्टिकोण होता है वो दृष्टिकोण पूरा change हो गया, and that's what this subject does, and I think that's what it should do also, क्योंकि ये subject ऐसा है कि जैसे जिमिश सर ने बताया कि it is a very deep subject, stay connected, stay deep. So today I just want to thank each and everyone throughout this journey, starting with our ex-principal Forbes sir. We have not studied under him, but the notes which he has written are so immaculate and so simplistic in language, it helped us big time. Sompura sir, Sharad sir, Kacha sir, Shrikant sir, Sundar sir, all the Venus energy here, Archana madam, Samta madam,
Saroj Dave madam, Tanivel madam, everyone, Kunal sir, his first lecture, 5th January, and I was so lost. Basically, मुझे लगा मैं ज्योतिष में आ गया हूँ, किधर आ गया हूँ पता नहीं चला, frankly speaking. But that's what this institute does, madam. Starting with astronomy, connecting with science to the divine science. That's what the journey is all about. And last but not least, the Honorable Secretary sir and our beloved principal. Thank you so much, all of you. And my journey wouldn't be complete without all my classmates over here. We have stayed connected throughout these 5 years, and it's a journey which can be done only together. It's not an individual journey. Thank you all of you. Love you all. आरती मुद्रा। कुछ बाकी नहीं रहा है. Everybody covered most of the things. Important point: sky gazing. The teachers that come along with you, spend the night with you. That is so mesmerizing. Heartfelt gratitude to all the teachers that I have been associated with, and thank you. ज्योतिका मखीजानी। I'm sorry, I'll take the help of the podium because it is written and I'll have to read it out. Good evening, everybody. It is indeed a great honor and privilege for me to deliver the vote of thanks on this memorable occasion. On behalf of my Jyotirvid, I extend my heartful gratitude to each one of you who made this day special and meaningful. First and foremost, I bow down to all my respected Gurujis who have guided us with their wisdom, nurtured us with love, and lit the path of our lives with the lamp of knowledge. I would like to take this moment to express our sincere gratitude to the incredible professors who have guided and supported us throughout our journey. Today we are here because of their continuous inspiration and blessings. They are just not our teachers, but our mentors, guides, and their impact on our life is eternal. They have planted in us the seeds of curiosity and discipline, and they continue to nurture with care. I would like to thank each one of you. Thank you for sharing not only your knowledge, but also your passion, patience, and belief in each of us. You all have challenged us to think deeper, work harder, and grow beyond what was possible for us. Your mentorship has truly shaped the way of our learning and life. We would like to honor our gurus with our actions, our humility, and our pursuit of knowledge. We are walking away this degree at the second year, but not going out of this college till we get other degree in the form of greater sense of purpose. A warm thank you to the organizing committee, volunteers, and all the support staff who work tirelessly behind the scenes to make this event meaningful and well coordinated. Lastly, but certainly not the least, a big thank you to each one of you is present. Your participation and presence have added warmth to the celebration. With folded hands and a heart full of gratitude from the bottom of my heart, thank you everybody. But still the final speech will come next year when we graduate as teachers. Now from second year student Kavita Sharma would like to say a few words on Gurupurnima. यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को साधुवाद और दोस्तों आप सभी का अभिनंदन। ये एक इंस्टीट्यूट ही नहीं है, ये हमें हमारे जीवन के उस पड़ाव पे पहुंचाता है जब हम बचपन से लेके आज तक का सफ़र करके आए हैं। पर मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं गुरु दक्षिणा जैसे कि हमारे गुरुवर ने कहा नहीं दे सकते, तो मैं मेरे भावों को कुछ 4 शब्दों में पिरोकर लाई हूँ जो आपके सामने प्रेषित कर रही हूँ।
मेरी इस श्रद्धा सुमन का शीर्षक है नमन। दिशाहीन भविष्य को गरिमामय बनाने वाले गुरुवरों को नमन है। जीवन का परिचय कराने वाले गुरुवरों को नमन है। हाँ, जीवन का परिचय कराने वाले गुरुवरों को नमन है। दिशाहीन भविष्य को गरिमा बनाने वाले गुरुवरों को नमन है। नमन है उस व्यक्तित्व को जो शताब्दियों से गौरवान्वित कर रहे हैं। नमन है उस व्यक्तित्व को जो शताब्दियों से गौरवान्वित कर रहे हैं देश की संस्कृति और संस्कारों को। नमन है दिशाहीन भविष्य को गरिमामय बनाने वाले उन गुरुवरों को नमन है। ज्ञान के ऐसे चक्षुओं को नमन है। नयन कमल है समर्पित रहबरों के उन पद चिन्हों को नमन है। नमन कमल है समर्पित रहबरों के उन पद चिन्हों को नमन है। दिशाहीन भविष्य को गरिमामय बनाने वाले उन गुरुवरों को नमन है। जीवन की राहों को सुगम बनाने वाले उन गुरुवरों को नमन है गुरुवरों को नमन है। गरिमामय हमारे भविष्य को गरिमामय बनाने वाले, दिशाहीन भविष्य को गरिमामय बनाने वाले गुरुवरों को नमन है। धन्यवाद। Thank you so much, Kavita Sharma. So now, at the end of the ceremony, I would like to thank all the students, definitely the Visharad and the Vedic students who have participated, come and enjoyed this whole ceremony, and also to our principal ma'am, honorable secretary, Siman sir, Sundar sir, Shrikant sir, for such a wonderful guidance. Shrikant, Jimesh sir, Vishal sir for the alumni, Samta ma'am, Archana ma'am, Dipti ma'am. So thank you so much for such a wonderful event. Last but not the least, when we say this is the Gurupurnima, is when we say it's not just teachers' day, it's like a relationship of students and the teachers. And what I would say from my part is, last year Vishal students gave me this T-shirt, and I wore it on my marathon day. So thank you for that. Thank you. Thank you so much. And the snacks are being kept out of the hall, and everyone would request to please have and collect from it. Thank you.